Good day, folks. Women, he thinks, are on his side. Badadi wale Baba. But it seems that his Shakti Pradarshan was also more or less a flop show for whatever reasons. Same time yesterday, bill to increase women's marriage age sent to Parliament panel. Now here's the deal, right? We'll discuss this a little later, right? Up tomorrow, maybe day after, more in detail. But the point to note is, this is a bill to control the women, not to give them any freedom, not for any protection. Hey, if they can vote at 18, there is no reason they can't marry at 18. It just makes no sense at all. No sense at all. It's again a tool of control. And what else can you expect from a party that essentially believes in Manuwadi, okay? Then you have this. MLAs and mayor relatives of commissioner, SDM, DIG official buy land in Ayodhya after SC cleared Ram temple. So Ram's being sold. I heard this. कोई बंदा कह रहा था कि इन्होंने तो राम के नाम पे भी लूट मचा दी है, तो क्या राम मंदिर के बारे में बात करते हैं? It's MPs absent in LS. BJP takes serious view. This actually tells you a message. The control, he's losing his control, right? In Kolkata, good old TMC Mamta kicks these guys where it hurts the most. TMC sweeps Kolkata civic poll with 72% vote share. They can shout and scream all they want. And like I said about women, how does that work, right? Harassment of girls sparks clashes in Bareilly village. That's not going away. And what Rahul said, interesting. Hindutwadi bathes alone in Ganga. Rahul targets Modi. Why is he bathing alone? See, there's a whole attempt to become God, right? And this is what it is. The ideological battles in India. Will the opposition counter the BJP from a center right or center left position? That's kind of confusing, right? That's kind of confusing. But what do we have here? No more high command, please. This is to be this is a statement for the Congress. But look at what Tavleen Singh says. Meanwhile, BJP spokesmen have found it hard to conceal their jubilation and what they perceive correctly as a total meltdown in the Congress. They need to control the glee and pay attention to the emergence in the past 7 years of a high command in their own party. Modi's devotees continue to use Luthians as an abusive word against his critics without noticing that the Prime Minister has done nothing to change the political culture that made Luthians Delhi into a detested power center that bred entities and ideas more sullied to feudalism than democracy. Okay, personally, I cringed at the craven sycophancy and hero worship that I saw at the reception the Prime Minister was given when he returned from the United States last Sunday. This is when he came back from the Quad Summit. Dancers and musicians from different parts of India were brought in to perform, and the BJP president spoke in high praise of Modi's achievements from a stage whose backdrop had the faces of the 4 leaders of the Quad on it. The Prime Minister stood with his hands folded in the middle of a giant garland with an expression on his face that made it clear that he accepted that he was worthy of the adulation. And for what? For speaking at the United Nations, meeting the American president and other leaders of the Quad. Not since the dark days of the emergency have I seen a Prime Minister greeted with such an open display of sycophancy. As I watched, I was overcome by a deep, depressing sense of deja vu. Deja vu. And here's the thing, right? And this is what Christopher Jaffalo and Prabhan Dhawan write. Christopher Jaffalo is writing out of Paris, just like this other fellow Villiers who keeps writing on theoretical crap. The Mandal Mandar equation. BJP's growing investment in caste politics is reflected in the composition of the Modi cabinet and stance on OBC reservation. Its challenge is to balance caste aspirations and its core Hindutva appeal. He said the BJP emphasized that never before had OBCs, SCs and STs been so well represented in the country's executive, as after 36 new faces were inducted, 47 union ministers and MOs now belong to those categories. Certainly, the overall presence of upper caste in the council has come down from 47% in 2019 to 32.5%, but upper caste is still a majority among the cabinet ministers. They occupy 16 out of 31 cabinet berths, controlling portfolios such as home, defense, finance, external affairs, etc. There are many Brahmins 6, Rajputs 4, Vaishyas 2, Khatris 2, Bhumiya 1 and Kanyat 1. Right. Now this has been trash, Mr. Jaffalo. It's trash. Their entire exercise is a flop show. Why? Akhilesh promises caste census and UP if SP voted to power. These guys declined to do that, so they're going to lose the caste as they're doing in Jharkhand. More later. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। पीएम मोदी ना तो टेनी को अपने मंत्रिमंडल से निकाल पा रहे हैं और ना ही सार्वजनिक मंचों पर वो टेनी के साथ खुद को दिखाने का साहस कर पा रहे हैं। विपक्ष तो टेनी के इस्तीफे की मांग को संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की बात कर रहा है। बीजेपी के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टेनी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। पूर्वांचल में दबंग सांसद की छवि रखने वाले बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आजकल मीडिया से बचते घूम रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से
भी दूरी बना ली है। मीडिया के साथ टकराव के बाद से तो वो उन कार्यक्रमों में भी नहीं दिखाई दे रहे जहां उनका जाना पहले निश्चित माना जा रहा था। बीजेपी नेता भी ये मान रहे हैं कि टेनी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। पार्टी अभी स्थितियों को तौल रही है। टेनी से इस्तीफा लिया भी जा सकता है। दावे तो यहाँ तक हो रहे हैं कि टेनी से इस्तीफा लिया जा चुका है। इसे स्वीकार कब करना है इसका समय तय नहीं हुआ है। फिलहाल पार्टी की ओर से टेनी को शांत रहने की हिदायत दी गई है। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के साथ बदसलूकी और बदजुबानी के बाद अजय मिश्र को दिल्ली तलब कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान अजय मिश्र ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। लेकिन जिस तरह से टेनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेर रखा है, उसके चलते सरकार टेनी का इस्तीफा स्वीकार कर विपक्ष के आगे खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहती। इसीलिए संसद सत्र के दौरान टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन यूपी चुनावों के ऐलान के बाद टेनी को हटाने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। लेकिन तब तक भी टेनी को बीजेपी ने खुली छूट नहीं दी है, बल्कि उन्हें लो प्रोफाइल रहने और सार्वजनिक कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। अमित शाह की चेतावनी का असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह से मुलाकात के बाद टेनी अपने कार्यालय में पिछले गेट से गए ताकि पत्रकारों का सामना न करना पड़े। गृह राज्य मंत्री को 20 दिसंबर को एसएसबी के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर असम के डिब्रूगढ़ जाना था, लेकिन वो नहीं गए। पीएम के साथ पूर्वांचल के सांसदों की मीटिंग में भी वो नहीं दिखाई दिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पत्रकार के साथ टेनी ने बदसलूकी न की होती तो शायद मामला ठीक हो जाता, लेकिन अब टेनी और बीजेपी दोनों ही फंस गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। So, this government and this BJP is all talk about caste and everything because, at the end of the day, what it is, that exercise in caste, right? Assimilation. Everyone is equal, but some are more equal than others. And it's a process of trying to get a monolith, make Hinduism into a monolith and a unitary religion, which it's not. But it's a funny thing. They want this caste to come under a Hindu umbrella, but under the same structure, the same stepping structure where the Dalits stay at the end. Because you see that here, right? Upper caste students refuse midday meal cooked by a Dalit. Hey. And why this caste system has fallen apart, that entire exercise is because of what happened in the farmer agitation and now this. Screws tighten on MOS son. SIT says killing of farmer was planned. Political heat after SIT says Lakhimpur events planned. MOS loses temper over question on jailed son calls journalist a thief. And they had a huge setback. A huge setback, folks. A huge setback. In the Nishad rally, where people got up and left, and they were only talking about election, and there were actually slogans in a rally of Mr. Shah. Shah's big OBC pitch at rally with Nishad. He says Nishads to help BJP win 300 plus seats. And what the Nishads are saying is they're not going to vote for him. And they're going to worry about this, right? Farmers killing in Lakhimpur, well planned, UPSIT tells quote. And good old Tomar with a little topi on top of his head. BJP farmers wing holds meet, hails PM for agri laws appeal. Repeat. Hey, where were you when he was bloody putting these laws on? You were hiding in a bill, a chuheki bill. PM showed large heart by repealing farm laws, says Tomar. Mr. Tomar, sir, did he show a larger heart when he put this dosa चुमा के हमारे ऊपर ये laws करती थी? तब कैसा heart था? तब दिल कैसा था? कहाँ था? आप बताइए मुझे. Need to take agriculture out of lab and link it with nature, says Modi. Right? Please, Modi sir, don't go the Sri Lanka way. They tied it to nature, and they are all dying hungry. Karnataka firm on APMC law, farmers plan still, let it come, let it go to the whole country. APMC, abolition, wherever it's happened, farmer is in trouble, folks. जैसे बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में क्यों चले जाएंगे भैया, जरा समझा दोगे? तो उन्होंने मुझे जो चीज़ समझाई वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। मैं पहले मुद्दा बताता हूँ कि राम एकपाल सिंह कौन है और क्यों छोड़ के गए। राम एकपाल सिंह वो छात्र है जिसने अपनी छात्र राजनीति के जीवन में ये सीखा कि एक संगठन है विद्यार्थी परिषद, संघ का संगठन है और देश हित की बात करता है। ये उस छात्र के मन में आया जब वो बनारस और उसके आसपास पढ़ाई कर रहा था।
पूरा जीवन उसने ये तय कर लिया कि अब मैं संघ के काम को, विद्यार्थी परिषद को, संघ को, बीजेपी को दूंगा। बनारस यूनिवर्सिटी में पहुंचा वो, विद्यार्थी परिषद के लिए संघर्ष कर गया, वहाँ के छात्रों के मुद्दों के लिए संघर्ष कर गया। हालत ये हुई कि पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में वो आदमी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद यानी बीजेपी का संघ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेता था, नाम था राम इकबाल सिंह। बीजेपी में आ गया और बलिया में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा हो जाए, बड़े से बड़े सत्ता भोगी नेता, मंत्री, विधायक अपने घर पर रहे, लेकिन राम इकबाल सिंह लठ लेके वो कार्यकर्ता के लिए जान देने की बात सामने लेके संघर्ष करने लगते थे। अब दौर संघर्ष वाला नहीं रहा, अब कारपोरेट हाउस हो गया। अंबानी भाई, अडानी भाई की बीजेपी हो गई। वो संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की, वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी रही नहीं। और यही बात राम इकबाल सिंह जैसे नेता समझ नहीं पाए। वो राम इकबाल सिंह जिसके घर पे राजनाथ सिंह जाके खाना खाते थे, कलराज मिश्रा खाना खाते थे, कल्याण सिंह उनको बहुत पसंद करते थे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी उस नौजवान नेता को पसंद करते थे। उस नौजवान नेता का दर्द फूटने लगा कि हो क्या रहा है, हमारी पार्टी, हमारे खून पसीने से सींची गई पार्टी कहाँ जा रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सम्मेलन होता है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में वो लोग बुलाए जाते हैं जो स्टेट के मेंबर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पार्टी है, तो बड़े लोग थे। सम्मेलन शुरू हुआ, मंच पे योगी जी भी थे, मंच पे केशव मौर्य भी थे, मंच पे दिनेश शर्मा भी थे, मंच पे स्वतंत्र देव भी थे और सारे बड़े नेता थे। राम इकबाल को बोलने के लिए बुलाया गया। राम इकबाल ने कहा कि ये मेरा घर है, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है, तो मुझे यहाँ पे सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर घर में कोई कमी है तो घर के बुजुर्ग की ये ड्यूटी होती है कि वो घर को ठीक करे। कैसे करेगा? अगर घर का बुजुर्ग नहीं बताएगा कि घर में कमी है तो घर कैसे ठीक होगा? घर का कोई बालक नहीं बताएगा कि मेरे को ये अभिभावक के सामने कि ये कमी है, तो कैसे ठीक होगा? राम इकबाल ने उस मंच पे बोलना शुरू किया कि मुख्यमंत्री जी अपने अफसरों पे काबू पाइए, बहुत बुरे हालात हैं, थाने बिक रहे हैं, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार गले गले तक अटक गया है, हमारे कार्यकर्ता थाना जा नहीं पा रहा है, मार के बंद कर दिया जाता है, जिले में लूट मची हुई है, अफसर सुन नहीं रहे हैं, अस्पताल से लेकर सड़कों तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार के रेट ना बढ़ गए हों, किसान बेहाल है, परेशान है। इस तरह की तमाम बातें की। और जब राम इकबाल बोल रहे थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। इसका मतलब कि जो कार्यकर्ता सामने बैठा था उसको लग रहा था कि मेरी बात कह रहे हैं राम इकबाल। और कार्यकर्ता कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं बैठा था, वो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी बैठे थे, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठे थे। कोई साधारण इंसान वहां जा भी नहीं सकता था। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। मतलब राम इकबाल के बोले से स्वतंत्र देव के पसीने आ गए कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोल क्या रहे हैं। और योगी जी का भी चेहरा थमथमा गया। स्वतंत्र देव खड़े हुए और जो ताली बजाने वाले को डांटा कि इस तरह ताली नहीं बजाई जाती है, लेकिन तब तक हॉल गूंजता रहा। राम उसके बाद कई ऐसे वाक्य हुए। राम इकबाल ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए। और मेरी मत मारी गई थी, मुझ पर आरोप लगने थे। 2 दिन पहले मेरी रिपोर्टर है निधि मिश्रा, आपने देखा होगा उसका यूट्यूब, आप नहीं देखेंगे नीचे जाके देखिए, अभी 2 दिन पहले 72 घंटे पहले इंटरव्यू किया, उसने ये सब बातें कही। अब बीजेपी में जब ये इंटरव्यू 3 दिन पहले 72 घंटे पहले जब जारी हुआ तो भाजपा में खड़कम मचा कि चुनाव से पहले उनका एक इतना इम्पोर्टेंट नेता इस तरह का बयान देगा तो गड़बड़ हुआ। बताया जाता है राम इकबाल सिंह ने एक बड़े नेता ने राम इकबाल सिंह को फ़ोन किया कि ये तरीका ठीक नहीं है। और राम इकबाल सिंह स्वाभिमानी आदमी, उन्होंने कहा कि तरीका सही नहीं है तो ये लो अपनी लपट कमरिया, बहुत नाचना चाहे हो, मैं तो चलो। और राम इकबाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता अखिलेश यादव के सामने ग्रहण कर ली। अब मैंने खबर छाप। So when Sitaraman writes, taxpayers paying for subsidies given during UPA regime, says Nirmala, you gotta have to laugh with a kind of obscene amount of money being spent by this government to promote itself and promote the Prime Minister and Yogi, the ishtihars and front page, middle page, everywhere. He's reached all the billboards in Delhi, he's all over the place, and apparently he's reached as far as Chennai, and my friends in Chennai are wondering who's this guy. But hey, what they should be worried about is this, the greater catastrophe by Chidambaram. He says, beyond what is visible, however, there is a fallout that was not visible to the naked eye. I shall call the fallout the less noticed but greater catastrophe. I refer to the education of our school children. Urban families with young children know that keeping the children within the confines of the home was a challenge. Rural families, after first few months, simply let them roam the village, streets and fields. All families were gripped by the fear of falling sick. They survived the first phase of fear without much thought to absence of school for their children, but as the weeks became months and months became a year, and the enforced absence from school had stretched
into the second year, the families are gripped by panic. This is what this government has done, thrown the children under the bus. Our future, folks. Jai Hind.